Students, very good morning. Welcome back to this science series. We are discussing about our chapter 9, that is reproduction in animals. In previous video we have discussed about fertilization and how it takes place in humans. Now we will discuss internal fertilization, or you can say types of fertilization. There are mainly two types of fertilization. First is internal fertilization and second is external fertilization. What is internal fertilization? The fertilization which takes place inside the female body is called internal fertilization. The fertilization which usually takes place inside the female body is known as internal fertilization. In internal fertilization, the female's egg are fertilized by sperm inside her body. In this fertilization, the male animal put his sperms into the female animal's body. In this type of fertilization, in which the fusion of male gamete and female gamete occurs inside the body of female animal is known as internal fertilization. Internal fertilization बेटा वो fertilization होती है जिसके अंदर जो जाइगोट हमारा फॉर्म होता है या फिर जो फ्यूज़न होती है मेल एंड फीमेल गैमेट की, विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी. जो फीमेल बॉडी होती है, एनिमल बॉडी होती है, उसके अंदर होती हैं ये सारी प्रोसेसेस. जैसे कि एग्जांपल्स आर काऊ है, आपकी डॉग है, कैट है, टाइगर है या फिर ह्यूमंस हैं. इसके अलावा और जो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैं जिनके अंदर फर्टिलाइजेशन इनसाइड द फीमेल बॉडी होती है, दैट टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन. Second is external fertilization. External fertilization is the fertilization which takes place outside the female body. जहाँ पे fusion of male and female gamete usually takes place outside the female body. जहाँ पे आपकी जो egg है वो fertilize होता है कहाँ? फीमेल बॉडी के बाहर. Like example इसका है frogs में, या आपकी बटरफ्लाइज होती हैं, मॉस्किटोज होते हैं. सो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? यूजुअली आउटसाइड. इन फ्रॉग्स एंड मोस्ट फिशेज द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स अक्कर आउटसाइड द फीमेल एनिमल बॉडी. जैसे कि आपके जो फिशेज हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं या जो आपके फ्रॉग्स हैं, उनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन है दैट टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी. The males and females of frogs and fishes release their sperms and eggs in water in which they live. The sperms then collide with the eggs and fertilize them outside the body of female frog or fish. क्या होता है, जो आपके मेल्स होते हैं और जो फीमेल्स हैं, they used to release their eggs or sperms in the water which they live. तो वो वाटर के अंदर रिलीज कर देते हैं. वहाँ पे जो स्पर्म्स हैं दे कोलाइड विद द एग्स एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. सच टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. देयर आर दीज एनिमल्स लाइक जो फ्रॉग्स और जो फिशेज हैं, दे यूज टू ले हंड्रेड्स ऑफ द एग्स एट अ सिंगल टाइम. वाई? क्यों ऐसा क्यों होता है कि जो हमारे फिशेज और जो फ्रॉग्स हैं बेटा, वो एक टाइम पे 100 ऑफ एग्स ले करते हैं? देयर इज़ अ रीज़न. आपको मैंने बताया क्योंकि उनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है. दिस इज़ द वन रीज़न. होता क्या है, मैनी ऑफ दीज एग्स एंड स्पर्म्स आर कैरिड अवे बाय द मूवमेंट ऑफ वाटर, विंड और रेनफॉल एंड हैंस डू नॉट गेट फर्टिलाइजेशन ड्यू टू द करंट ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ एयर एंड यू कैन से रेनफॉल. इसकी वजह से जो बहुत सारे एग्स और जो स्पर्म्स हैं दे आर टेकन अवे, दे आर कैरिड अवे. मैनी ऑफ द एग्स ऑफ फ्रॉग्स आर ईटन अप बाय द अदर एनिमल्स विच लिव इन वाटर. अभी जो एग्स थे दे कैन बी ईटन एज अ फूड बाय अदर ऑर्गेनिजम्स विच लिव इन द वाटर. मैनी ऑफ द लार्वा ऑफ फ्रॉग and the fish which are hatched
from fertilized eggs are eaten up by other animals in water and fail to develop into adult frogs. थर्ड क्या रीज़न हो सकता है? जो एग्स फर्टिलाइज हो गए उनसे जो हैच होने के बाद जो बेबी वहाँ पे मिला वो क्या होता है? दैट कैन बी ईटन बाय अदर एनिमल्स. उसको भी कोई और एनिमल एज ए फूड खा लेता है. तो उनमें से बहुत ही कम जो फर्टिलाइज्ड एग थे वो अडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो पाते हैं. आफ्टर देन कम्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. अभी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था. देयर आर टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. फर्स्ट इज एसेक्सुअल एंड सेकेंड इज सेक्सुअल. अभी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में स्टडी करेंगे इन एनिमल्स. एग्जाम्पल इन कह सकते हो आप ह्यूमंस की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे. नॉट दैट मच ऑफ डिटेल बट अ लिटिल डिटेल. A sexual reproduction in animals takes place in following steps. Those steps are the male parent produces male gametes called sperms. The female parent produces female gametes called eggs. The sperm enter into the egg. The nucleus of sperm fuses with the nucleus of the egg cell to form a new cell zygote. And this process is known as fertilization. जो हमारा sperm होता है that enters into the egg and their nucleus fuses and form a new cell which is known as zygote. Zygote divides repeatedly to form a hollow ball of 100 of cells which are called embryo. Now this zygote keeps on dividing and form a ball of 100 cells which is known as embryo. Embryo grows and become a fetus. After that embryo further divides and become a fetus. Then this fetus grows and develop to form a new baby animal. Then this fetus now grow and develop into a baby. Now we will discuss our reproductive system. First is of male and second is of female in humans. The human male reproductive system consists of testes, scrotal sacs, epididymis, sperm duct, seminal vesicles and penis. These are the reproductive systems, you can say parts of human male reproductive system. Now let us discuss these parts and their function. First is testes. Testes are oval shaped organs which lie outside the abdominal cavity of men. They are 2 in number. Look, these are the testes. ये आपका डायग्राम है, इसमें देखो ये हैं आपकी testes. These lie outside the male body. These are 2 in number. Testes are real reproductive organs in men. कैसे? Because they secrete or they release sperms. Testes के अंदर से ही sperm निकलता है. Testes make male gametes called sperm. Testes are enclosed in 2 small bags of skin called scrotal sacs. These are known as scrotal sacs. These are bag-like structures which is present outside the male humans. Sperm gets stored temporarily in epididymis. अभी हमने पढ़ा कि जो sperm है that is formed in testes. After that sperm gets stored in epididymis. These are epididymis. From epididymis, the sperm are carried by a long tube called sperm duct into organs called seminal vesicles. These are seminal vesicles and this is sperm duct. The seminal vesicle joined to another tube called urethra coming from the bladder. This is urethra and this is bladder. Urethra carries the sperm to an organ called penis. This is urethra. These carry
sperm to an organ named as penis. Penis is an organ for introducing sperm into the woman. Penis एक ऐसा organ है which is used to introduce sperm into the woman. The penis passes the sperm from the man's body to the woman body for the purpose of reproduction. And this passing, because of this passing of sperm into the woman, the reproduction takes place. Just because of these sperms, sperm की वजह से ही reproduction होती है. Sperms के साथ साथ eggs की भी requirement होती है. Next we will discuss the female reproductive system. The human female reproductive system consists of following organs, that are ovaries, oviduct, uretus and vagina. Uretus and vagina. Ovaries are oval shaped organ. A woman has 2 ovaries. Ovaries are real reproductive organs because eggs are formed in ovaries. The female sex cells called eggs or ova are made in ovaries. Eggs को ova नाम भी दिया जाता है, ova भी बोला जाता है and ovum भी बोला जाता है. The egg released by an ovary goes into the oviduct through its funnel shaped opening. देखो ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है. These are the ovaries. ये जो funnel shaped है, यहाँ से जो eggs हैं they go into the oviduct. In human beings, one mature egg is released into oviduct every month. The egg from the ovary is released and it goes into the oviduct, which is also known as fallopian tube. The release of an egg from the ovary is called ovulation. The fertilization of egg by a sperm takes place in oviduct. The sperm enters from vagina, then it goes into cervix, then uretus, and then it goes into the oviduct, where the process of fertilization takes place. The 2 oviducts connect to a bag-like organ called uretus. This is uretus. जिसको हम womb भी बोलते हैं, WOMB, womb. The growth and development of fertilized egg into a baby takes place in uretus. जो हमारी growth होती है, development होती है एक baby की, that usually takes place in uretus. Vagina receives the penis for putting sperm into the human body. This structure named as vagina is used for putting sperms into the human body. So these are 2 structures, 2 reproductive systems of humans. Thank you, students.